हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीथल गेमिंग। सो गाइस, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी स्टोरी हॉगवर्ट्स लेगेसी की। गाइस, तो लास्ट का मैं आप लोगों को रिकैप दे देता हूँ कि हमने नया स्पेल सीखा था एक्सपेलेरियामस, जिसकी मदद से हम वो केव में गए थे जहाँ हमें वो बुक के दो खोए हुए पेजेस मिले थे। जो बुक हमें मिली थी लाइब्रेरी के बेसमेंट में, जो कि था रेस्ट्रिक्टेड एरिया लाइब्रेरी के नीचे। तो वो बुक के जो दो पेजेस थे वो एक गोश्त के पास थे। वो एक गोश्त ने दूसरे गोश्त से चुराए थे, और वो गोश्त क्या है, एक जगह जाके मर गया था, उसके बाद वो गोश्त बना था। तो जहाँ मरा था बंदा, जिस केव में जाके मरा था, तो उसके कॉर्प्स के, उसकी बॉडी के पास में वो दो पेजेस थे। तो वो कलेक्ट करने के लिए हमको जाना पड़ा वो केव के अंदर। तो हम जाते हैं, हम उसकी बॉडी रिकवर करते हैं, बहुत सारे उनसे स्टैचूज से, स्पाइडर से लड़ते हैं। ये स्पेल हमारे बहुत काम आया था गाइस, एक्सपेलियार्मस उसके अंदर, जिसकी वजह से हम वो मिशन पूरा कर पाए। और फिर वैसे ही हम थोड़ा सा उस केव में अंदर जाते हैं तो हमें दिखते हैं प्रोफेसर रैकम, जिन्होंने हॉगवर्ट्स बनाया था और जिनके साथ वो लड़की थी जो कि हमारी तरह ही एंशिएंट मैजिक कर सकती थी गाइस। तो हमने उनसे और बात करने की कोशिश करी, पर उन्होंने कहा जब तक कि तुम वो बुक जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हमने ढूंढी थी, जो कि प्रोफेसर फिक के पास इस टाइम, कि वो जब तक तुम यहाँ लाके नहीं रखोगे तो वो तुमसे आगे बात नहीं करेंगे। तो मेरे को तो गाइज लग रहा है वो बुक मंगाने का कोई झांसा दिया जा रहा है, कोई स्पेल है, कोई एन्चांटमेंट है जो हमें धोखा दे रही है। अब आगे देखते हैं, हम वो बुक ले जाके वहाँ रखते हैं तो क्या होता है गाइज। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज, अगर आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, प्लीज़ 1 सेकंड लगेगा बस। और मैं इसके लिए आपकी और अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा, गेम प्ले वीडियोस लाता रहूँगा। तो बस सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप इसके बाद कौन से गेम की वीडियो चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। तो हम आ चुके हैं, और हाँ, अब हम उड़ना भी सीख चुके हैं ब्रूम स्टिक पे गाइस। तो मुझे लगता है हॉगमीड जाके अब हमें एक झाड़ू भी खरीद लेनी चाहिए अपने लिए, ताकि हम ट्रैवल जल्दी जल्दी कर सकें गाइस। तो चलते हैं और क्वेस्ट में देखते हैं अब हमारे लिए क्या वेट कर रहा है। वेयर इज क्वेस्ट, या देयर इज वन असाइनमेंट इज देयर। प्रोफेसर साहब का असाइनमेंट है, अक्वायर एंड यूज अ फोकस पोशन। ओके, acquire maxima and endurance potion and use them simultaneously. ओके, तो टैलेंट्स में देखते हैं, टैलेंट्स में क्या है हमारे पास। कुछ नहीं है ये क्यों दिखा रहा है फिर। अच्छा, 8 टैलेंट पॉइंट्स अवेलेबल है हमारे पास। तो हम स्पेल्स में देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेवल 22 रिक्वायर्ड है इसके लिए। अच्छा, ये अच्छा नीचे से है, इसमें मैं ऊपर से देख रहा था गाइस। ओके, दिस इज गुड। अगर मैं इंसेंटिव कास्ट करूंगा तो फ्लेम की वो रिंग बना देगा। दैट इज रियली नाइस। ओह, गुड वन मैन। ओके, अगर 2-3 एनिमी साथ खड़े होंगे तो तीनों को एक साथ पुल कर लेगा। दिस इज गुड मैन। लेवियोसा से भी सेम होगा। पहले ये इंसेंडियो वाला कर लेते हैं, क्वाइट टैलेंट। अच्छा, सब कुछ एक एक ही यूज कर रहा है, तो सब कुछ अपग्रेड कर लेते हैं। ये भी एक यूज, और ये भी। ये नहीं खोले अभी तक। अच्छा, ये मैं स्पेल्स ही नहीं जानता हूँ अभी तक। नो प्रॉब्लम। ये हो गए। डार्क आर्ट में क्या कर सकते हैं हम। ओके, स्टूपीफाई का सेम इफेक्ट होगा जैसे कर्स का होता है। ओके, दैट इज गुड। ओके, दैट इज रियली गुड। ओके, एक्सपेलियार्मस का सेम इफेक्ट होगा। ये वाला ले लेते हैं अभी के लिए, एक्सपेलियार्मस वाला। ठीक है, अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो अपग्रेड कर ही लेते हैं सब कुछ में से। एंशिएंट मैजिक, थ्रो कैचेस एंड थ्रो डिसआर्म। ओके, डिसआर्म कर सकता है। अच्छा, एक साथ हम 8 यूज कर पाएंगे। ये तो जरूर यूज करते हैं भाई। दिस इज रियली यूजफुल। अच्छा, 2 सेट, 3 सेट हो जाएंगे फिर हमारे पास। ओह, दैट इज नाइस। ग्रेटर इफेक्ट ये कर लेते हैं भाई। हेल्थ पोशन जरूरी है, आपको पता है। ओह, दिस इज गुड। ये भी कर लेता हूँ, ये मारने के काम आएगा। ओह, दिस इज ऑल्सो गुड, या
अब हमारे पास 0 हैं। अरे यार, आई मिस दिस मैन। चलो कोई नहीं, एक टैलेंट पॉइंट और मिलेगा तो इसको बढ़ा देंगे। स्टेल्थ में क्या क्या है? क्या एनिमीज एबिलिटी टू डिटेक्ट यू रिड्यूस, हाँ वही होगा इसमें तो। नॉट बैड। रूम ऑफ रिक्वायरमेंट, व्हाट इज दिस? एंड्यूस पोशन मेक्स यू इनवल्नरेबल एंड डिफ्लेक्ट प्रोजेक्टाइल अटैक, ये भी गुड, अच्छा है यार, दिस वन इज गुड। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं और अपने मिशन की तरफ। वो मैं I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. चलो ये भी कर लेंगे यार। Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and भाई distractions. कितने सारे असाइनमेंट आ गए एक साथ यार, देखने दो अब क्वेस्ट में। पहले करते हैं ये वाला, मीट सेबेस्टियन। सेबेस्टियन, अच्छा इससे हमें एक वो मिलेगा रिवॉर्ड, कॉन्ज्यूरिंग स्पेल। ये वास्को पहले ये सेबेस्टियन वाला कर लेते हैं। डिलीवरी, इसमें गोल्ड मिलेगा, ये भी करेंगे। पहले ये 2 मेन क्वेस्ट कर लें, फिर उसको देखते हैं बाद में। लेवल 8 रिक्वायर्ड, लेवल हमारा तो 10, 11, 12 पहुंच चुका है अब तक तो। हाँ चलो सेबेस्टियन के पास चलते हैं गाइज। लेट्स मीट सेबेस्टियन। I need to get some dragonhide gloves for herbology. We need to go from this side. चलो 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 चलो। ओह गाते भी हैं भाई ये स्टैचूज ना। सबसे बढ़िया बात तो यही है भाई, इसमें हर एक चीज में कुछ ना कुछ एलिमेंट, कुछ ना कुछ तो डाला हुआ है। पेंटिंग कुछ करती है, आर्मर्स गाते हैं, स्टैचूज सल्यूट करते हैं जब आप जाते हो पैर उठा के, हाथ उठा के, सॉरी नॉट पैर उठा के, समझ गए ना आप लोग बस गाइस। ओके यहाँ वेट करना होगा सेबेस्टियन का। Sebastian is here, guys. Over here. Sorry, Sebastian. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you हाँ did यार in the सही में library. भाई ये नहीं Of बचाता तो course. हमारी लग जाती। Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place. ध्यान नहीं करना चाहिए। Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Undercroft. This way. चलो, I'll follow you. हम आपके पीछे पीछे, सेबेस्टियन। क्योंकि अब उद्धार तो There's a चुकाना secret पड़ेगा गाइस, अब passage उसके लिए just हमने here. उसने हमारे लिए It's काम well किया है। disguised. Is it fine? No, yeah. Okay, Undercroft. What is this, man? अकेले गए हम? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. Oh. He named it the Undercroft. Revelio. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. बिल्कुल भाई। He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. भाई हमारे ऊपर We used ट्रस्ट to कर sneak सकते हो in फुल। almost daily. We've never been caught. टॉक टू सेबेस्टियन यार। I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says,
The wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or theirs. Understood. But what? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot... Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. पर यार जरूरी तो है यार. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, जो कि हमारे Forbidden Forest में और बहुत जगह काम आने वाला है लड़ने में. But you should learn it. बिल्कुल भाई मैं तो जरूर सीखूंगा यार. हाँ मैं तो इतनी. It may take a while to get the feel for it. मुश्किल होगा ये Mimic वाला my ना. wand movement. The incantation is Confringo. Very well. देखा अलग अलग वो हैं इसमें. Got it in the first time, guys. अब मैं थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ ये कैसे स्पेल को होगा. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. कन्फ्रेंस जो ये वाला है क्या? नहीं स्पेल है. ये होना चाहिए हाँ. तो इसको लगा लेते हैं अभी हम लोमोस की जगह. Keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo... Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's He's it. good man. I think I've got it. Well done. भाई क्या स्पेल सिखाया यार have to सेबेस्टियन say, ने. I ये तो मुझे enjoyed लगता है that. दोस्त The first बनाना time Ominous and I लायक है यार. practiced मैं तो Confringo, सोचा था इससे we कहीं नहीं singed our बात करूंगा. eyebrows. Yeah, but this I is would have good. paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. that is Haven't good. been here in some time. It's not... I'm sorry about your sister. If there's anything like... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. बिल्कुल यार ऐसे तो बिल्कुल कर लेंगे हम. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle सोलोमन नाम Solomon. के आदमी मेरे को बेकार लगते हैं. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she हम needs. तो I shall बिल्कुल look यार forward to ऐसे it. Cheers. दोस्तों की मदद करना तो बहुत ज़्यादा जरूरी I'm not होता है. sure where to start. You said something आप was लोगों को क्या missing लगता from है? what you करनी found in चाहिए the ना? library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To भाई इसको तो Gringotts? सब कुछ बता Well, दिया. it's all a bit convoluted. I'm listening. अभी नहीं बता सकते यार. The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between... बिल्कुल भाई. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. पर अभी किसी को कुछ नहीं बता सकते हम. चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे यार. वो चीज़ प्रोफेसर फिग ने छुपा के रखने को बोली अभी बिल्कुल, क्योंकि उससे और लोगों को भी खतरा हो सकता है, खाली हमें ही नहीं. किसी और को इसलिए नहीं बता सकते. Hello, Sebastian. Wait.
You there? I can hear you. Oh, hello. ओमिनियस आ गया भाई. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't नहीं he? भाई. You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I और need डरा to. रहा है. हट. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you अबे very जाओ much. यार. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. बुद्धि दबा देता भी फालतू बोलता मेरे से तो हाँ. Revelio. कुछ है क्या यहाँ पे? चलो. Next. Purchase a broom. Okay. एक काम करते हैं. हॉग्समीड चलते ही हैं क्योंकि हमें ये वाला पैरी पिपिन से भी बात करनी है और हमें ब्रूम भी खरीदनी है. तो दिस विल बी गुड फॉर अस गाइज. थोड़ी कम दर्द हो रहा है. चलो. मैप 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 हॉग्समीड. ये रहा ना. ये क्या है? कुछ अलग है. हाँ पैरी पिपिन. और यहाँ पे होगा ब्रूम वाला ना. यहाँ पे यहाँ फास्ट ट्रैवल कर लेते हैं गाइस जल्दी जल्दी से ताकि मैं आपको दिखा सकूं और ज़्यादा उड़ के स्पेल्स करके मज़े करके. पैसे हमारे पास हैं वैसे अभी तो. Revelio. New face. Wonderful. हाँ. Hello, Mr. Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come. Shop's been closed since trade routes were आए नहीं disrupted. हम इसलिए. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. बिल्कुल. Got a few rare हाँ, U-weavers बढ़िया सी दे available. दो. Ember Dash, Silver Arrows, Wind Wisps too. Sounds quite the array of brooms. I'll have a... थैंक यू जल्दी दिखाओ. What are we looking for today? वेवरी ब्रूम 600 की है. सब कुछ 600 की है. A comfortable and speedy broom with a unique woven design. The perfect broom for those with a fiery temperament. A broom enchanted to celebrate your particular Hogwarts house pride. नहीं. A finely crafted from ash built for stability. A stylish broom with a light touch, quite literally. ये वीवरी ब्रूम यही देखते हैं भाई. That item is of the highest quality. और ये वाली कैसी है? ना. That item is of the highest quality. यही बेस्ट है भाई. 600 रुपया. You'll be thrilled with that broom, I promise you. यार ये चलो बाद में बेचने का देखेंगे. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their... You seem to be a flyer who might be interested in, say... Go on. Ha! Knew I was right about कुछ सिखाना you. बताना चाह रहा I है. think you'll be quite happy with the performance.
But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this Okay. issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, Okay. that... What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can No perfect... problem. As it हम happens, बताएंगे। another Hogwarts student, Imelda क्या Reyes, दिक्कत है? an ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom... I Absolutely, could complete बिल्कुल। work on my first upgrade. That sounds intriguing. I'll see. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in... The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will... बिल्कुल। Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. अच्छा, Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. अभी इसके पास जाएंगे बाद में भाई मेरे। फ्लाइट टेस्ट ये नहीं करेंगे, पहले ये पिपिन के पास जाते हैं। वैसे मैं ये साइड क्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ यार? मेन स्टोरी पे ध्यान देते हैं ना, आप लोगों को भी बेटर रहेगा आपके लिए। हॉगवर्ट्स में प्रोफेसर रोनी, यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। मेन क्वेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं यार। ऐसे तो स्टोरी इसमें फालतू की चीज़ें करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया। हमें तो मेन स्टोरी पे ध्यान देना है। And then the werewolves join the goblins. गॉब्लिन वेयरवुल ये यही बातें करते रहते हैं, डराते रहते हैं एक दूसरे को। बच्चे डरते रहते हैं। और यहाँ हमको देखो, हम पता नहीं किस किस से लड़के आ रहे हैं। पहुँच गए। यहीं पे वेट करने बोला था प्रोफेसर ने 7 टावर पे। Professor Weasley? कहीं से अपीयर होगी मेरे को लग रहा है एकदम से। Somewhere away from prying eyes. या हमें ढूंढना पड़ेगा कुछ। वो इसमें दीवार में तो नहीं है शायद से। अच्छा, ये वही गेट है जो जरूरतमंदों के लिए अपने आप खुल जाता है, अपने आप बन जाता है, जो कि कमरा है। क्या बोलते हैं इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा। हॉगवर्ट्स में था ना ये। Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. अच्छा, तो हमने गलती से कर दिया है ये, धोखे में। Shall we? After you, Professor. इज्जत पहले, इज्जत और मान सम्मान पहले, देख रहे हो आप? What is this place? This is the room, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। जब भी रिक्वायरमेंट It only होगी, appears when one is in रियल नीड real ऑफ need इट। of या it. Ordinarily, a student might stumble Revelio. upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco. Evanesco. The vanishing vanish spell. करने का spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things Oh, here that in the is room. good. चलो सिखाओ सिखाओ। हम तो स्पेल सीखने ही बैठे हो। पहुंच गई। ओके, वी डिड इट। इवेनेस्को। वो कर्स वाला स्पेल हटा लेते हैं। Splendid. Now, cast. कहाँ है इवेनेस्को? ये है ना? Go on those chairs.
Oh, nice, Excellent nice, work. good one, man. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. मूनस्टोन Let's के move कुछ on. तो काम होंगे, हमने कलेक्ट भी कर रखे हैं काफी ना, जा जाके. Where in Merlin's name is that elf? कौन सा एल्फ? ये क्या है? Is that... I Goodness. waited for you. My old school bag. I wondered where that had got to. Oh, Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Revelio. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. okay. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Even Asco. अरे ये बोलते क्यों नहीं है स्पेल यार? ये मेरे को अच्छा नहीं लगा. जो भी स्पेल करो बोलो ना. अच्छा, इस पे काम नहीं करेगा. Accio. तो ये निकलवाया क्यों? कुछ तो काम होगा इसका. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ. Accio. मैंने ज्यादा आगे खींच दिया गया. अब तो नहीं चढ़ पाएंगे हम. Accio. हो पाएगा क्या? हो तो रहा है. हो गया. पर फायदा ही नहीं कुछ. फायदा ही नहीं है कुछ गाइस. कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे हम. हाँ, यहाँ पे हमने वो स्पेल किया था ना. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. ओ बेचारा बिखर गया. कुछ तो है यहाँ. Bit offended. The room thought I needed a bath. चीखी थी. Flush. ओके, ये चल गया इससे. Beautiful room, man. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. अब कहाँ जाए? ओ, मैप में रास्ता देख लिया वो तो मैंने. What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Revelio. Accio. अच्छा, ऐसे भी खसक जाएगा भाई. मेरे को लगा फंस गया मैं. खसक जा भाई, खसक जा यार. फंस गया यार मैं. ऊपर चढ़ना है क्या इसके? नहीं. Revelio. Accio.
Revelio. Okay, got it. Accio. But how to go there, man? कोई तो वे होगा. Revelio. I hope that house elf can find us in here. पता नहीं यार, वो तो स्नेच तो हम मिल ही नहीं पाई. गोल्डन स्नेच देखते हैं उसका. वो रहा एल्फ. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. आ जाओ डीक भाई. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Yeah, the student. Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. Oh. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be... It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident. If deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them, you seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant, man. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without... Well then, the room can... ये रूम कर तो सकते. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the अच्छा, कुछ भी rest. सोचो कर देगा आंख बंद करके हमारे लिए. क्या हो रहा है भाई ये? कुछ तो बढ़िया होने वाला है, या कुछ बहुत ही बुरा होगा या कुछ बहुत ही बढ़िया होगा. कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया है ये. You've given yourself quite a canvas to भाई work with. साहब, what we have imagined, man. क्या मस्त रूम imagine. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the desk of description. Use it to reveal the magical properties of any unidentified gear that you have collected. Okay. No unidentified gear. Nothing to identify. For now, at least. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable ठीक है. resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need Okay. on. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring I'll objects. teach you. Okay. Yeah.
सीख गए। कॉन्ज्यूरिंग स्पेल, कॉन्ज्यूरिंग मूवी तो आपने क्या देखी When होगी, conjuring बड़ी more मस्त हॉरर complex मूवी भाई, objects, वन ऑफ द you बेस्ट need what's called a horror movie I have ever spellcraft. seen till the only the first Spellcrafts are part, like जो सिर्फ पहला recipes. part था। They list the ingredients or resources needed to conjure a particular Okay. object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained वो जो throughout हम the collect Highlands, करते आ रहे हैं। it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the Okay. room, such as the chairs you vanished earlier. हाँ वो मिला था हमको, I हमने see. देखा था। Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already Okay. used to study magical plants. Conjuring spell, new spell unlocked. Potions, herbology, utility, wall hanging. Okay, potion select करते हैं। ओके, 2 मूनस्टोन चाहिए। स्मॉल बोटैनिकल पोशन स्टेशन, यहाँ कर देते हैं इसको। इसको कर देते हैं यहाँ। ओके, ओके, नहीं कर सकते हम ये। अच्छा, एक ही वो कोल कर सकते थे, अब ये कर लेते हैं हर्बोलॉजी वाला। साइंटिफिक पॉटिंग टेबल फॉर ग्रोथ दैट स्मॉल पॉट, गोथिंग पोटिंग टेबल फॉर प्लांटेड स्मॉल पॉट। चलो ये वाली कर लेते हैं। कौन सी अच्छी लग रही है? ये सही लग रही है। Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow अच्छा, plants. मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा इसके Presuming, of लिए। course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or समझ गया, outside the समझ castle गया। grounds. ये तो हमारे पास है। रग्स, ये सब की जरूरत नहीं है अभी। चलो। Deke will be here to answer any questions you may have. थैंक यू प्रोफेसर। I will be sure to speak with Deke if I need anything. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the बिल्कुल room. प्रोफेसर, सीखना तो चाहेंगे हम जरूर, अभी नहीं तो बाद में। रूम ऑफ रिक्वायरमेंट, और क्या लगाया था हमने? एंड्योरेंस मैक्सिमा पोशन बना लेते हैं। 15 सेकंड ही लगेगी। इतने आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड 1 सेकंड लगेगा, इसको बनने में फिर भी टाइम लग रहा है। इतने में तो 15 लोग सब्सक्राइब कर देंगे। बन गया।
ये तो टाइम लगेगा इसको तो। और चलिए अब देखते हैं इन्वेंटरी में क्या आ गया हमारी। ओके, नोट है कुछ। टैलेंट में हमारे पास पॉइंट आ गया है। तो कौन सा वाला सोचा था मैंने कि ये एंड्योरेंस पोशन, नहीं अभी ये नहीं था। स्टेल्थ में था क्या कुछ? नहीं, स्टेल्थ में भी नहीं था। कोर में था ना ये वाला शायद से। हाँ, ये कूल डाउन कम कर देगा थोड़ा सा ना। गुड फॉर अस। आउल पोस्ट में क्या है? प्रोफेसर फिक का कम एंड सी मी आई डिस्कवर्ड समथिंग इन द लॉकेट वी फाउंड एट ग्रीन गोट। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। कम एंड सी मी एज सून एज यू कैन। आई हैव रिटर्न फ्रॉम अ रैदर अनप्रोडक्टिव ट्रिप टू द मिनिस्ट्री होपिंग योर टाइम हैज बीन मोर फ्रूटफुल देन माइंड। बिल्कुल, हमारा तो अच्छा ही जा रहा है प्रोफेसर अभी तक। तो थोड़ी फाइट करनी पड़ रही है हमको, पर या इट्स गोइंग वेल। मैप चेम्बर, हाँ मैप चेम्बर, मैप कह रहा हूँ, मैप चेम्बर के बारे में बात करते हैं। चलो ये वाली क्वेस्ट चलते हैं। वेयर इज माई मैप, वेयर इज आवर मैप, मैप मैप मैप। आउल फिर से आया किसी का? नहीं, क्वेस्ट में मैप पे चलते हैं। चार्म्स क्लासरूम इसके पास में ही है। ओह मैन, थक गया हूँ यार मैं आज तो। I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Okay, sure, Professor Garlic. पर पहले मेन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, प्रोफेसर से बात करते हैं। ये सब साइड मिशन तो मैं बाद में भी कर लूँगा गाइस, मतलब पीछे पीछे कर लूँगा आप लोगों के ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। आपको मेन स्टोरी दिखानी ज़्यादा जरूरी है, क्या होने वाला है आगे। I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about... Wouldn't listen to a word about Goblin. Listen, Professor. So much. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pump. Who on earth is... He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? Yes, Professor. I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. तो अब जाएंगे हम प्रोफेसर फिक के साथ में। तो एक काम करते हैं गाइस, पहले ना अपनी स्पेल लगा लेते हैं, ये वाली कन्फ्रिंजो वाली, क्योंकि यही यूजफुल है हमारे, और कोई काम नहीं आएगी। The room is called the map chamber, by the way. विंगार्डियम लेवियोसा, लेवियोसा सीखे हैं अभी। अच्छा, विंगार्डियम लेवियोसा लगा। Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? से चुराए थे उसने। Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. आ जाओ प्रोफेसर साहब। To think it was beneath us all this time. भाई we are here। यहाँ रखनी होगी शायद से बुक ना, शायद से, मेरे को भी आइडिया नहीं है कुछ भी ना, मेरे को पता है। हाँ देखा। This looks promising. पर यार चलो रखते हैं, कुछ तो पता लगेगा। अब तो प्रोफेसर फिक हैं साथ में, तो डरने की ज्यादा बात है नहीं। ओह, कुछ तो हो रहा है गाइस, कुछ तो हो रहा है भाई।
हंस रहा है, अभी पता थोड़ी है कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। Map. There's Hogsmeade. इसको कैसे दिख रही है भाई? And over here, the Forbidden Forest. ओह अच्छा अच्छा, अब दिख रहा है। Of course, Hogwarts. It's magnificent. कुछ दिखाने चाह रहे होंगे मैप पे ये पक्का। आ गई है प्रोफेसर रैकम। If only you were here to see this. आ गए प्रोफेसर रैकम। Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. कुछ बताना चाह I रहे also हैं। see why you refer to this room as the map chamber. Okay. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long doesn't. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. हम सिर्फ बता सकते हैं किधर पहुंचा सकते हैं, पर करना मुझे खुद ही पड़ेगा वो ट्रायल. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Sure, Professor. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. No, I'm not going to tell anyone, Professor. मेरे से कोई कुछ भी बुलवाने की कोशिश कर ले. वो 1600 मीटर दूर है भाई ये. Almost 1.6 किलोमीटर. जरा मैप पे देखें तो सही एक बारी कहाँ पे. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me.
सब कुछ क्या क्या सिखाना चाहते हैं भाई हमको? बहुत कुछ सीखना है यार, बहुत कुछ सीखना है अभी तो। एक प्रॉपर मास्टर बनने के लिए अभी तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमें। तो क्वेस्ट में देखते हैं। अब हमारे पास एक मेन क्वेस्ट है जहाँ की हमें प्रोफेसर से मिलना है। फोकस पोशन है, ये शार्प का असाइनमेंट है, ये कगावा का है, कोगावा का, ये प्रोफेसर गार्लिक का है, फ्लाइट है, बहुत कुछ है यार अभी करने के लिए ना। ये सब तो मैं करूँगा अभी, विल डू। ये देखते हैं मैप पे कितनी दूर है भाई वो, वर्ल्ड मैप पे देखना पड़ेगा। ओके, फॉरबिडन फॉरेस्ट में बिल्कुल अंदर जाके एंड में जाके है ये। चलो कोई नहीं, जाएंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमने और काफ़ी कुछ कर लिया है गाइज़। हमने नए स्पेल भी सीख लिए हैं। एक हमने जो है कर्स स्पेल भी सीख लिया है, पावरफुल स्पेल, जो कि कॉन्टीजो, जो कि हमें सेबेस्टियन ने सिखाया था, वो भी एक उसके अंदर सीक्रेट रूम के अंदर। फिर हम गए प्रोफेसर वीजली के साथ, रूम ऑफ रिक्वायरमेंट हमने सर्च किया, जिसमें कि हम अपना टाइम बिता सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, दूसरे लोगों से टाइम अपना बचा के, असर अपना ना कहीं पे हम लगाएं, ना अपना कहीं वेस्ट करें, ताकि हम एक एकांत में अपने स्पेल्स, अपनी पोशंस और वो सब प्रैक्टिस कर सकें रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। और फिर हमने एक मिशन किया जहां हम प्रोफेसर फिक के साथ वो बुक लेके गए, वो बेसमेंट में जो कि हॉगवर्ट्स के नीचे है, जहां हमने बुक रखी और प्रोफेसर रैकम से हमने बात करी। तो उन्होंने बताया कि इस मैजिक को और हमें पावरफुल बनने के लिए 4 ट्रायल्स देने पड़ेंगे, जो कि प्रोफेसर रैकम ने अपने दोस्तों के साथ मिलके बनाए थे उस टाइम पे। तो अगर मैं ये 4 ट्रायल्स धीरे धीरे कंप्लीट कर लेता हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ अपनी एबिलिटी से, तो हम बहुत ही पावरफुल एंशिएंट मैजिक वील्ड कर लेंगे गाइस। हम बहुत ही पावरफुल विजर्ड बन जाएंगे, जादूगर बन जाएंगे। तो देखते हैं आगे आगे हम कैसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर ये ट्रायल कंप्लीट करेंगे। प्रोफेसर फिग हमें वहाँ ले जाएंगे जहाँ हमें ये कंप्लीट करना है, और भी बहुत कुछ सीखना है हमें। बहुत सारे अदर मिशन भी पड़े हैं जहाँ हमारे प्रोफेसर हमें बेताब हैं सिखाने के लिए और चीज़ें, और हम बेताब हैं उनसे ज़्यादा सीखने के लिए। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दी वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो आपको गेम कैसा लग रहा है, और इस गेम के बाद आप कौन से गेम प्ले की वीडियो चाहते हैं। तो गाइज लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।